स्ट्रीम में स्वागत है। मेरा नाम है किटने और आज वापस स्टारफील्ड में खेल रहे हैं। पता नहीं कितने देर करूँगा स्ट्रीम। आज सही बोलूँ तो मेरे गले में दर्द हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन शायद हो गया। बात करने पे भी थोड़ा गला दर्द हो रहा है सही में। नहीं करना चाहिए मुझे स्ट्रीम सही बोलूँ तो। मैं क्या 1 घंटा कुछ देखता हूँ अभी स्ट्रीम करके, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो कंटिन्यू करूँगा, पर शायद इवनिंग ऑफ ले लूँगा। यार काफ़ी हो रहा है। उतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, चलता है। मोस्ट प्रॉब्ली इवनिंग में नहीं करूँगा, आज सुबह कर लेता हूँ स्ट्रीम और इवनिंग में नहीं करूँगा मैं। इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ अभी के लिए? बहुत कुछ, पर फिर भी और क्या कर सकता हूँ मैं? अभी के लिए स्ट्रीम करते हैं, अभी के लिए स्ट्रीम करते हैं। अब ये म्यूट करने दो। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीम और कंटिन्यू। नहीं लोड, यस। ओके आगे बढ़ते हैं। सबसे सब कुछ ले लिया था मैंने। चलो आगे बढ़ के देखते हैं और क्या होगा यहाँ पे। आओ वो रहा ना, मुझे कोई एक स्नाइपर टाइप का चाहिए सही बोलूं तो। आई एम श्योर इससे भी काफी ज्यादा हो जाएगा। ओह कोई एमो ही नहीं था इसमें। ये क्या? और नहीं गया अभी भी, यहाँ पर कहीं है। यहाँ पे नीचे भी एक है, मुझे याद है। मारते जाओ मारते जाओ। नहीं मारते जाओ मारते जाओ। इसका आधा करते हैं, तू भी कुछ थोड़ा मार दे यार। पूरा सही में। हाँ वहां पे दिख रहा है अभी भी, इधर कहीं है। कहाँ से मार रहे हैं ये सही में? सही में कहाँ से मार रहे हैं? दिख रहे भी नहीं है। वो है क्या? नहीं ओ वेल, ना आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा नहीं है कोई। क्या? किसने मारा मुझे? शिट भाग गया यार। यार ये और मैं मर जाऊंगा अभी।
कैसे मरा पता नहीं। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते जाओ। 17 यहाँ पे एक आएगा बंदा। एक मिनट रुकना यार, ये स्किल्स का थोड़ा देखना है। ये हो गया। रैंक अप 50 एनिमीज, डैम। और इसका कितना बचा है अभी? इसके मुझे 12 और मारने हैं। लेजर एनिमीज, पिस्टल, लेजर से 9 और मारने ना सिर्फ। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लेजर का माना जाता है और ये पिस्टल भी माना जाएगा मेरे हिसाब से। तो थोड़ा बहुत मार दिया फिर भी इसने मुझे। यहाँ पे से ओह डैम। इतना ज्यादा कम कर दिया यार, इतना जल्दी। पर ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या करना है। पहले ये लगाओ और फिर आगे बढ़ो। ग्रैंडल क्या? वही मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं दिया इसने मुझे। अब वो उससे मार रहे हैं ना, यहाँ पे आराम हो रहा है। मारते जाओ इसे। वो सारा पे मारते रहे, अच्छा है मेरी तरफ ना मारे। सारा मेरी सीट। ओह शिट, यहाँ से मार रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ओह शिट, ये भी गया। अब बस एक बचा है यहाँ पे। कहाँ से मार रहा है वो पता नहीं, पर प्रॉब्लम वो है। अब क्या? अब थोड़ा देखता हूँ ये कितने हो गए। 16 हो गए ना, और ये 13। सही है, 5-5। इसके साथ मुझे अभी 7 और मारने हैं, तब दोनों के दोनों हो जाएंगे। इससे जरूरी नहीं है, इससे कम से कम मैं 4 और मारूंगा। उसके बाद पिस्टल के लिए मैं चेंज कर सकता हूँ। ओह शिट, यहाँ पे आ रहा है बंदा। माना आ जा ये सारा भाई, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे सारा उन्हें मारने लग जा। क्या कवर चाहिए उधर, कोई मारने के लिए है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, अबे यार मैं अटक गया सही में।
मान में क्या ये लगा, इसका इस्तेमाल करना होगा इसी तरह। वो क्या हो रहा है? इतना ज्यादा डैमेज किया हमने उससे। हमने उसका ऑलरेडी बहुत डैमेज कर दिया था। शिट, लगभग मार दिया इससे। उसे मर जाना चाहिए था अब तक। वो हील करने लग गई या करने लग गई। वेल नहीं, ये हील क्यों कर रही है? ना शिट यार, जा इससे भागने नहीं देना है। अरे यार, मान में क्या ये वाला मुझे नहीं चाहिए। ये वाला सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से कई बार मरना होगा ये करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं। आई मीन डिफिकल्टी ऑफ कोर्स कम कर सकता हूँ, पर मैं करना नहीं चाहता अभी। नहीं 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 नहीं, इतने ज्यादा बुलेट्स बर्बाद किए इस बंदे ने, और मुझे एक बार भी नहीं मार पाया ये। Don't leave any of that behind. और फिर यहाँ पे देखना है मुझे। Just some stupid noise. ओ, इन्हें मारना है यार यहाँ से। तो अभी मार दो ताकि ये बाद में परेशान ना करे। ये मरा।
ये इधर चले गए। ये इस ब्रिज के नीचे, मैं कुछ नहीं कर सकता इनके खिलाफ अभी, तो आगे ही बढ़ते हैं। Oh, fuck. पूरा पीछे चले गया। अरे उतना पीछे नहीं गया है वैसे। इधर इसके पास आ जा बस। यार उसके पास आ गया था वो। अबे यार ऐसे मिस नहीं कर सकता मैं। ऐसे मारते जाओ यार। इधर तो नहीं आ रहा ना? नहीं, वो ऊपर जा रहे थे। ओ नहीं 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 नहीं, 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 मैं उससे नहीं लड़ना चाहता अभी। नहीं यार, मिस कैसे हो रहे हैं? ऊपर उठ जा, ये बंद नहीं वाला है। ओके, ये इसका एक खत्म होने वाला है। ना इसको लग रही, मार ही नहीं पा रहा हूँ यार। उसके भी पास नहीं है वो, एक्सप्लोडिंग के पास। Shit. मार। ओह, इसके पीछे छुप गया वो। यहाँ पे आ गया अभी। Badly for you. जाके मार ना, फिर उसे बोल रही है दिस इज गोना एंड, पर मार रही नहीं है। I can't take much more of this. Shit. कोई एक्सप्लोड ही है ही नहीं यार उधर। एक्सप्लोर करने के लिए कुछ है ही नहीं उधर सही में। यार ये एक्यूरेसी काफी कम है इसकी सही में। और मार दे वो मरने वाला एक। मरा। ये यहाँ पे आ रहा है यार। दो हैं अभी भी। उधर सारा खुली भी है, उसे मार।
सारा तू क्यों नहीं मार रही उससे? नहीं नहीं नहीं, You picked the wrong day to piss me off. Anything? ओह फक। नहीं 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 नहीं। हील कर दिया उसने पूरा अपने आप को। फेस अप पंक। ओह शिट, इसे देखा ही नहीं ऊपर वाले को मैंने। It's payday. यार सही में पर कहाँ है वो? Wrong day to piss me off. ओके वो एक वाला तो मरने वाला है। वो दूसरा वाला बंदा कहाँ है? ओह नहीं, Not gonna last much longer. Hands off. ये हुआ ना, अब बस एक ही बचा है। तू उसे मार दे थोड़ा। Show me what you've got. Right here. हाँ उसे मारते रहे ऐसे ही। I won't die. Not taking me out. नहीं नहीं नहीं, Through. ओह I didn't stock up on junk. ओह बाप रे, मार दिया उसे। थोड़ा हीलिंग दे दे मुझे, इतने ज्यादा हैं यहाँ पे, किसी के पास तो हीलिंग होगा। किसी के पास भी कोई हीलिंग नहीं है क्या सही में? सेव करो। Got all worked up for nothing. ओह वहां से अभी ऑलरेडी मार रहे हैं। और देखो तो मेरा ये कितना है, डबल हो गया है लगभग अभी। डैमेज रेजिस्टेंस ठीक है, रिस्टोर्स फोर्जर की। मुझे हेल्थ रिस्टोर वाला चाहिए। ठीक है ये भी ले ही लेता हूँ अभी के लिए। चिकन मसाला ये छोड़ो, अभी वेपन मेरे पास काफी आए हैं ना अच्छे। इक्विनॉक्स यूरिस मॉडिफाइड इक्विनॉक्स, ये 17 डैमेज कर रहा है, ये सिर्फ 4 डैमेज कर रहा है। फायर रेट ये उतना कुछ खास नहीं है सही बोलूं तो, यही ज्यादा अच्छा है। अभी भी फायर रेट इसका बुरा नहीं है, इसका भले ही ज्यादा होगा। और एक ग्रेंडल का है 4 26 ना, ये 15। ठीक है
इसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। पर अभी के लिए इसके साथ जाना होगा। एक ही बच्चा है बंदा यहाँ पे। कहाँ पे है वो? सही जगह सेव किया मैंने। एक पहली बात तो रिसोर्स 4 हेल्थ, इसे ले लो, इसे भी ले लो। और फिर अब वेपन में एक चीज करना है, इसको फेवरेट करके यहाँ पे लगाओ। और अभी के लिए सही में इतने दूर से मार दिया मुझे। मुझे इससे दूर रहना, ये फूट सकता है क्योंकि यहाँ पे अंदर, ओ ऊपर है। ओके, और सारा उसे क्यों नहीं मार रही? ओ फक लगभग मर गया था मैं। कहाँ है? अबे बच गया मैं बाल फक। कुछ भी करने से पहले एड करो एलिंजर की। ये रिस्टोर्स 5 हेल्थ, रिस्टोर्स 5 हेल्थ, रिस्टोर्स 5 हेल्थ, रिस्टोर्स 5 हेल्थ। और कोई हील वाला है? मीट लो। ओ मेड पैक, यस यस यस। 3 10 3 सब कुछ लेते ही जाओ यार। ओह वेपन का लगाओ एक यहाँ पे नीचे, ये है ना, इसको यहाँ पे डाल दो। ठीक है, और एक बार फिर से सेव करना होगा यहाँ पे। यार नहीं, इसका एमिंग का पता नहीं अच्छा नहीं है कि क्या है। अब फाइनली सब कुछ हो गया, सबको मार दिया। कोई और बचा नहीं है ना अब तो। ये इतना लंबा क्या है यहाँ पे? Exploring new mining operations has given me a new appreciation for the risks Dusties take to make a living. रिक्वायर्स की, हाँ वो मेरे हिसाब से उधर होगा, तो उधर ही पहले जाना था यार।
आगे बढ़ो। और फिर यहाँ पे कोई और नहीं होना चाहिए। कटर मेरे पास ऑलरेडी है कटर, फिर से क्यों रखूँगा? एक्चुअली एक मिनट रुकना, एग्जैक्ट सेम है। मुझे लगा था शायद कुछ, ओह डैम, ऊपर जाने का भी कुछ है। मुझे लगा कुछ मॉडिफाइड या कुछ होगा, एक्स्ट्रा डैमेज या कुछ, पर ना, एक सिंपल कटर और कुछ नहीं। Is it really necessary for you to drag around all that gear? Yes. This epic laser pistol. Why not? क्राफ्टिंग का है तो मैं रखूंगा। कुछ खास नहीं है, कॉस्ट के लिए रख लेता हूँ। हाँ पर यस, रिसर्च लैब। हाँ, यहाँ पे अब मैं बना सकता हूँ ना अगर चाहता हूँ तो। कंफर्म, यस, इसका पूरा हो गया। अब ब्लॉग, पर टेट्राफ्लोराइड्स नहीं है, आर्गॉन नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री रैंक 1 चाहिए उसके लिए। Mixology, आउटपोस्ट डेवलपमेंट, इक्विपमेंट, कंफर्म, ये भी हो गया। जितने भी हो सके करता हूँ यार अभी। लेज़र ऑप्टिक 2, इन सब के लिए पता नहीं क्या चाहिए। ब्लॉक डेपर, ये वेपन इंजीनियरिंग रैंक 1 चाहिए। यही और ये कर नहीं सकता अभी, ठीक है। कंफर्म, नहीं है कुछ भी। इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है मेरे पास। उसके अलावा कुछ नहीं है। ओवरफ्लो, सडन डेवलपमेंट, रिमेनिंग प्रोग्रेस पता नहीं। पॉलीमर चाहिए, ठीक है। फार्मेसी का ये आर्गन और टेट्राफ्लोराइड चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, इसका कुछ भी नहीं है मेरे पास। डेकोरेशन, इसके भी सारे नहीं है। ओ, लगभग हो गया था। मेरे पास सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं है। डैम, एल्यूमिनियम कुछ ज़्यादा ही चाहिए सही में। ओके, काफ़ी रिसर्च कर दिया। तो अब इंटरकॉम का देखते हैं। Hello? Oh, took care of the spacers, huh? Good. Now to finish off the research, you're gonna need to collect a sample of hematite to run through the thresher. Grab a laser cutter and head back to the chamber where you came in. Once you've got a sample, thresher's the big machine in the next room. Passcode to start it is Aries 2330. Take care of all that, and we'll have Percival's name cleared in no time. ऑप्शनल चेंज पॉसिबल डेप्थ अमाउंट है, इसके साथ जाना है अब। हीमाटाइट, एक्वस हीमाटाइट, हाँ। स्पेसर, इसको मैंने इन दोनों को कर दिया था ना शायद। हाँ, आगे से हट जा।
मुझे चाबी चाहिए ये आगे जाने की। अभी के लिए तो यहाँ पे चलेगा। Password accepted. Initiate ओके दिख रहा है। access the data and existing potential. Calling. Process complete and collect your documentation. ओके ये भी हो गया। कॉन्टैक्ट कैम्ब्रिज। और मैं क्या पहले ये कर लेता हूँ। All set? Good. You can take the elevator in that room back to the surface. There should be a key stashed in the thresher room, if the spacers didn't make off with it. I'll be waiting at the circle. एम्प्लॉय एग्जिट रूम। ना 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 ना, ये एग्जिट रूम नहीं, एग्जिट की, सॉरी। मुझे पहले यहाँ पे जाना है। ये खोलते हैं ना अब। ओनली ड्रिल वेस्ट रूम एक्सेस की। मुझे किसका वो एग्जिट की मिला यार कोई। अब ये ड्रिल वेस्ट रूम एक्सेस की कहाँ पर है पता नहीं। सबको तो लूट चुका हूँ। एक मिनट, वो हाँ वो बड़े वाले को भी लूट लिया था मैंने। इसको भी लूट ही लिया होगा। नप नहीं लूटा था। हाँ एक मिनट रुकना यार। ठीक है, हेरेटिक राइटिंग्स 8000। These are illegal to have on you or in your ship. Security ships orbiting major settlement will scan your ship for contraband and will not let you land. You have a chance of smuggling past them. If you fail, you could be arrested and have your contraband confiscated. Okay, that's it. Time to sell some of your junk. Antibiotics और कटा। हाँ बेचूंगा। मुझे ड्रिल रूम की चाबी चाहिए पर ये सीधे मास सरफेस ही जाता है। वापस नीचे जा सकता हूँ। यस, ये कहाँ पर है? ये सारा पीबी ही है। फ्रंटियर। और मैं क्या बोलते हैं, फास्ट ट्रैवल भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सब कुछ पकड़ा हुआ है। या एक नया चीज था कुछ जो मैं, ये क्या, अबैंडन माइंस। हाँ यहाँ पर ही जाना है पहले तो मुझे। टीवी है यहाँ पे, पर एक जगह मुझे कुछ एक नया दिखा था, मैं उसे माइन करना भूल गया। कैल्शियम भी दिखा था ऑफ कोर्स। उसके अलावा भी कैल्शियम का पता नहीं कैसे बाइंड करना है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे चलो थोड़ा, ये तो बहुत दूर है। पर चलते रहो। यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कोई और एनिमीज नहीं होंगे यहाँ पे सही में। वहाँ पे कुछ हो सकता है और वो बाद में कभी देखूंगा। प्लीज़ कोई ना हो, प्लीज़ कोई ना हो, क्योंकि यहाँ पे सही में मुझे कुछ दिखा था और मैं लोगों से लड़ना नहीं चाहता उसके लिए।
ये सारा यहाँ पे लेड ही है। पीबी वो रहा ना, एक और लेड। पर इसके लिए नहीं आया हूँ यार, एक चीज़ था जो मुझे चाहिए था। क्या हो गया इसे? इतना समय क्यों ले रहा था ये शायद ना, ये भी लेडी है। वो दिखा था मुझे। हाँ, एक्वस हेमाटाइट। ओ एक्वस, ओ नहीं, ये भी एक्वस हेमाटाइट ही है। डैम। सही है। और ये रिसोर्सेस में काउंट क्यों नहीं हो रहा है एक्वस हेमाटाइट? क्लोरीन भी पता नहीं ले पा रहा हूँ मैं। तो अभी के लिए काफ़ी लेड ले लिया, काफ़ी। यहाँ पे भी वो फिर से क्लोरीन, या वो देखना चाहता हूँ मैं। तो एक और बार ट्राई करना चाहता हूँ, क्लोरीन क्यों नहीं हो रहा है? अरे यार, ये सब छोड़ो, इसको क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं? पहले भी ट्राई किया, मालूम है, मालूम है क्या, शायद मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये करने से पहले सेव। चलो नॉप, इससे भी कुछ नहीं हुआ। मेरा मैक्सिमम हेल्थ कम हो गया है। मुझे ये ओके, यहाँ पे ऊपर बता दिया कैसे मैं ये ऑरेंज बार को निकाल सकता हूँ। चलिए वापस ये लगाओ। डैम, यहाँ पे इतने ज़्यादा लेड है। God's sake, drop some of that rubbish already. टेंशन मत ले सारा, मैं निकालूंगा उसे। बहुत चीजें बेचने वाला हूं मैं, टेंशन नहीं लेने का। रिसोर्सेस 2 आउट ऑफ 4 कैसे हो गया? मैं ध्यान ही नहीं दिया ये 2 आउट ऑफ 4 कब हो गया। वाह भाई वाह, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। क्लोरीन का मैंने कुछ लिया क्या सही में? ये क्लोरीन के अलावा मुझे नहीं मालूम। स्कैन करने का है, स्कैन नहीं किया मैंने शायद। एक मिनट रुकना, इसे एक बार स्कैन करता हूँ। नहीं, इसको स्कैन करिए। एक्वस रिसोर्स यार, उसको मुझे स्कैन करना चाहिए। एक्वस हेमाटाइट, उसे मैंने स्कैन नहीं किया और उसके लिए पूरा उधर जाना होगा। कौन जाएगा पूरा उधर उसके लिए? अभी बाद में कभी चले जाऊंगा। अभी के लिए तो यहाँ पे पहुँचने ही वाला हूँ मैं, लगभग पहुँच गया हूँ। ये लाल आ गया, आना शुरू हो गया। ओह यार,
लाल कम हो, ऑक्सीजन बढ़। अरे हाँ, मैंने वो लिया हुआ है ना रिसोर्स एक। बहुत चीज़ें बेचने हैं मुझे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये और ये अलग है। एक मिनट रुकना, पूरा फुल होने से जस्ट पहले रुक जाऊंगा। 95 और ये ओके, थोड़ा अलग है। ये डेफिनेटली परेशानी कर रहा है। मुझे अपना लिमिट बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। 300-400 के आसपास चाहिए मुझे अपना वेट लिमिट। चलो चलो चलो। और ये पहुंच गया। More time exploring the Martian surface than roaming around Cydonia itself. Cydonia can have a depressing effect on some people. Make sure to get yourself help before it becomes a problem. Okay, How's it going? Can I help you? Yes, definitely. और पहले वेपन सारे देख लो कौन कौन से हैं मेरे पास। इक्विनॉक्स कोई तो है ये, और ये एक और ग्रेंडल। 3, 6। मुझे कंपेयर करना है। नहीं, ग्रेंडल ये कर दिया। वेपन्स ये ग्रेंडल को करो। मास ज़्यादा है, 3 मॉड्स हैं, एक्यूरेसी थोड़ा कम है पर बाकी सब सही है। तो फिर ठीक है, मैं ये वाला ग्रेंडल लगाने वाला हूँ अब। फिर और क्या क्या है? इयॉन है ना, पता नहीं। इक्विनॉक्स मेरे पास कोई एक इक्विनॉक्स है ना? मॉडिफाइड रैटलर, मॉडिफाइड मेलस्ट्रॉम, ग्रेंडल 3। ये कोई एक इक्विनॉक्स ये रहा ना। ओके, वैसे वाला है। ये रहा इक्विनॉक्स वेपन। और इसको कंपेयर करो, 3 गुना। आई मीन ये ही ज़्यादा करेगा क्योंकि इसका 3 गुना है और मास भी कम है। बल्कि फायर रेट अगर देखो तो ये मॉडिफाइड वाला इक्विनॉक्स ज़्यादा करेगा। ये बिल्कुल नहीं, इसे मैं बेच दूंगा। एक्यूरेसी ज़्यादा है, मैक्स साइज कम है, मास भी कम है। ये बुरा नहीं है सही बोलूँ तो। इसे रखना शायद ज़्यादा अच्छा होगा। मैं 14 वो चेंज नहीं करना चाहता हूँ सही बोलूँ तो। मालूम क्या, बेचने की बारी आ गई है। Hey, you looking for anything in particular? Cool. That's what we do here. Sell weapons. बाकी सारे ग्रेंडल को बेच दो। All. But Equinox इसे रखने वाला हूँ, इसे बेचने वाला हूँ। इसका नहीं,
एक ग्रैंडल यहाँ पे ऑलरेडी है 170 176 के साथ ना 2.05 इसे भेज दो। इसे रखो, एक को भेज दो। या ये स्क्रॉल व्हील इतना परेशान करता है सही में। इस सॉल्स्टिस को भेज दो। इसे रखता हूँ यार अभी के लिए। इस 170 ना, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ कंफर्म, 2 की जरूरत नहीं है मुझे। Come back anytime. 2 मिनट देना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। वापस आ गया। अभी भी इतना ज्यादा क्यों है? Hey, welcome to the Sidonia Trade Authority. Sounds like a plan. I can... मेरे हिसाब से ये स्पेस नहीं, स्पेस ये भी उतने है नहीं। मुझे लगा था इसके मल्टीपल होंगे मेरे पास, पर वैसा भी नहीं है। एक ही है हर एक का। ये रहा ना, अपैरल। ये जरूरत नहीं है, इसके भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी यार सबसे ज्यादा कौन ले रहा है सबसे ज्यादा? यही ले रहा है लगता है। इनका लकीली कोई मास नहीं है। इक्विनॉक्स ये रखूं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये वाला भेजना है।
बेचना है आई मीन इसको रखना है इसको और इसको करे 186 ना 50 14 79.8 मास इसका कम है हाँ इसे बेच दो सॉल्स्टिस इसका एक है ना मेरे पास सॉल्स्टिस का यहाँ ये रहा ना सॉल्स्टिस 22 26 25 25 30 76.1 1.3 4 बाप रे बाप इसे बेचना होगा मैक 22 सब कुछ में वही ज़्यादा अच्छा है सिवाय मास्क के ऑफ कोर्स बस ठीक है क्या कर सकते हैं चलो ये हो गया स्पेस सूट 2 ही है रेडिएशन से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है $392 ओह ओके 3 थे इसके पैक्स पर कॉन्स्टलेशन पैक रखूंगा मैं पहले ये करोसिव वो रेडिएशन थोड़ा बहुत है पर मैं फेंकता हूँ फिजिकल एनर्जी और ईएम का है थोड़ा ठीक है 5 20 5 5 20 5 नॉप 34 18 26 बेच दो यार इसको भी बेच ही दो बेकार में रख रहा हूँ इतने सब यूसी वैनगार्ड ठीक है पर इसे बेच दो इसको भी बेच दो और मैं क्या जो भी ऐसे वाले ना उन सबको बेच रहा हूँ मैं रेयर एपिक ये कॉमन वाले सारे बेच रहा हूँ मैं जो भी हो ओके इसके तो सारे के सारे कॉमन ही है और इसमें भी सारे के सारे कॉमन ही है वाह भाई वाह क्या बचा है इतना ज्यादा 140 इसे बेच दो नो नो दूसरे को नहीं बेचना चाहता था शिट ऑल रैप इसे बेच दो बेस्ट एंड हेल्थ इसे बेच दो और इसे भी बेच दो ये 184 इतना ज्यादा और क्या है सही में मेरे पास नो बैटल सिम को नहीं बेचना चाहता था मैं क्या कर रहा हूं पता नहीं यार इन सब की वजह से ओके अब डिसाइड करना ही होगा कुछ भी नहीं देता बेच दो ओ ये बुरा नहीं है सही बोलूं तो 36 -15% incoming physical damage from ranged weapons while grounds up and physical resistance to lower your health plus 25 radiation resistance बेच रहा हूँ इसे अभी मैं अभी भी 39 और चाहिए वाह भाई वाह
इसको इन दोनों में से किसी एक को बेचना चाहता हूँ मैं, सही बोलूँ तो कॉन्स्टलेशन पैक को रखूँगा। चलो। ओ मिसलेनियस ये सब भी होता है। डीजी पिक तो नहीं, ये सिर्फ बेचने के लिए तो बेचता हूँ इसे। वायल भी बेचता हूँ। नोट्स 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 इससे रखना जरूरी है क्या? हिस्ट्री ऑफ जीनोबायोलॉजी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। और अब ये रिसोर्सेस, ये सारे क्राफ्टिंग के लिए चाहिए, तो इनमें से कुछ भी नहीं भेज सकता मैं अनफॉर्चुनेटली। और ये ही सबसे ज़्यादा कर रहे हैं मेरे हिसाब से। See you around. चलो ये हो गया। P2 चलो। फाइनली ये साइड क्वेस्ट हो जाएगा। Always nice to kick back into broken spear. You've got the slate. Let me see. Reduced joint wear? Oh, increased lifting capacity. A dose of this stuff could make a miner way more efficient. This formula's got to be worth at least as much as whatever Percival owes. Okay, so here's what you do. Tell Octai and the Trade Authority you found a business proposal that will make miners more efficient, higher yield, synergy, you know, all that business crap. And that you'll trade it to him for clearing Percival's debt. You good at doing pitches and stuff like that? Yep. Yes, that's perfect. You're gonna do great. Oh, and here, a copy of the formula for yourself, in case you ever want to try maximizing your own industrial output. Oh, use that if you can. Good luck. और फाइनली उसका डेप्थ प्ले करेंगे और हम उससे मिल पाएंगे पर्सिवियल से। गलत तरह। Was there something else? I don't recall the exact figure off the top of my head, but with the interest it's accrued, it's something substantial. If you're feeling charitable, I'd be happy to look it up for you. Oh, बिल्कुल नहीं। I'm never one to turn away an opportunity. But I'd be curious what you think you've uncovered in the Martian market that others have missed. Aqueous hematite, iron and wastewater. Well, I'm not surprised no one has proposed something like this before. And exactly what does this new drug of yours do? 15%? Sounds promising. But where's this hematite coming from? The active mines would be too expensive to retool. The deep mines could be an option, but they're full of spacers. Or so I've heard. कौन सा ये बोलने का मन कर रहा है, पर ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। इसे नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं बिना किसी क्रेडिट के इसके लिए काम करूँगा। ये Is that so? Well now, that is intriguing. A completely untapped resource pool, and the sort of utility every mining firm in Sidonia would be clamoring to get their hands on. We could contract out all the actual lab work, bring on one of the hungrier mining concerns for materials. The licensing fees alone.
And think what it would do for our image with the general populace. This mine, reopened thanks to the Martian Trade Authority. Very interesting indeed. And what do you want for the rights to this drug? Sort of payment. A discovery like this merits, and perseverance debt cleared, or I walk. Now, let's not do anything hasty. We can certainly accommodate those requests. I'll wire you the payment personally. And your friend Percival? Well, consider his debt cleared. We'll just be taking that slate before you have any second thoughts. It was a pleasure doing business with you. 15,000 वाह भाई वाह उससे ज़्यादा उम्मीद कर रहा था सही बोलूँ तो मैं कुछ 10-15 हज़ार उम्मीद कर रहा था वो डिस्कवरी के लिए ना सिर्फ 3,000 Yeah? Did you now? Fine work. My end of the bargain then, I suppose. He's holed up in the old Red Devil's HQ. Place was sealed up tight after the UC shuttered our unit, but we snuck him in the back entrance through the deep mines. Was also going to warn you about spacers down there. But it sounds like you might have already tossed those dregs. Yeah, the passkey. And I'll let him know there's someone he owes one hell of a thank you on their way down. Drill waste room access. Say. The Red Devils aren't exactly your average bar crowd. You can see it in their eyes. We don't belong here. हाँ पर हम यहाँ पे हैं अब नहीं ये वापस दे सकता हूँ ना बहुत धन्यवाद मैंने गलत बटन दबा दिया था There's a huge difference between being prepared and carrying too much. Now safe to resume normal activity for the remainder of the day. Detonations to resume tomorrow. फिर से उधर तक जाना होगा ड्रिल वेस्ट रूम में यार सही में पास में नहीं ले सकता था क्या Oh shit, नहीं अभी कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे इधर जाने का चलो अब और क्या कर सकते हैं जाना है तो जाना ही है नहीं मुझे कोई लॉक पिक करना है यार मैंने बहुत समय से नहीं किया कोई लॉक को पिक मिच बेंजामिन वो एक और साइड क्वेस्ट यहाँ का बोल रही थी बंदी वो कुछ सुनाई दे रहा था माय फ्रेंड मिच कुछ बोल रही थी उससे रिलेटेड होगा और अब वापस उधर तक भागो हाँ मैं क्या एक्चुअल में पहले मैं अपने शिप में जा रहा हूँ शिप में स्टोरेज है जितना मुझे याद है क्योंकि ये एक ऑप्शन था सेल फ्रॉम शिप और अगर स्टोरेज का ऑप्शन है मतलब मैं शिप में कुछ डाल सकता हूँ ऑप्शन नहीं है क्या सही में नहीं बनाने के लिए कुछ भी नहीं है इसका रिसर्च स्टेशन ओके वेपनरी का कुछ
भी नहीं है, सब कुछ ब्लॉक्ड है। वेपन इंजीनियरिंग 1 चाहिए इसके लिए। रिसर्च मिल गया, गैली मिल गया, ये मैप है। लगता है मैं गलत था, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे डालने का चीज़ों को। बहुत अच्छे। In Sidonia. Ah, I cherish these visits to the forgotten corners of the United Colonies. ना, यहाँ पे भी कोई जगह नहीं है। कुछ भी डालने का नहीं था, भागना होगा उधर अब, और कुछ नहीं कर सकता। और नॉन स्टॉप अपने ये O2 के बढ़ने का इंतज़ार करना होगा। अरे कुछ गाड़ी या कुछ नहीं दे सकते क्या? मैं उसमें सोच रहा हूँ जाके कुछ चोरी कर सकता हूँ क्या, पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है मेरे पास और लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा मॉर्गन है अपैरेंटली। शिट 900 मीटर दूर है वो। अगर कोई क्या बोलते हैं एक्वासेमेटाइट मिला तो मैं उसे स्कैन करूंगा। उससे 3 आउट ऑफ 4 हो जाएगा। एक आखिरी कौन सा है कोई आइडिया नहीं है मुझे, सही बोलूं तो। पीवी है या बीबी, काफी पीवी दिख रहा है पर मुझे एक्वासेमेटाइट चाहिए। Carrying enough clutter there, or should we find some more? Unfortunately, मुझे और चाहिए अभी ये। एक्वासेमेटाइट या एक्वासेमेटाइट मिल गया मुझे। ओके, इसे स्कैन कर दिया। चलो, लगता है वो ही एक्वासेमेटाइट लेने से वो 2 आउट ऑफ 4 हुआ है। और मुझे अभी भी नहीं मालूम ये कैसे लेना है क्लोरीन को। ना शायद ये क्या है? नहीं, गलत वाले में आ गया हूँ। ये डेफिनेटली सही रास्ता नहीं है। तो वापस निकलो, मैं डायरेक्टली वो उसके पास जा सकता हूँ, वो डीप माइंस का जो है। ये लंबा रास्ता मैं बेकार में क्यों लूँ?
उधर जाना, पर यहाँ पे कुछ दिखा मुझे। श्योर। यहाँ पे किसी को मारा था मैंने मोस्ट प्रॉब्ली, उसका अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये लंबा रास्ता क्यों जाऊंगा मैं, फिर से सबसे क्यों लड़ूंगा मैं, बाई चांस वो फिर से स्पॉन हो गया तो। डीप माइंस एम्प्लॉय एग्जिट। आई मीन मुझे थोड़ा रुकना तो पड़ेगा ही इसके लिए, तो रुकते हुए थोड़ा माइंड कर दूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा। कोई माइंड करने का दिख रहा ही नहीं है। Cycling airlock. क्या साइकिलिंग एयरलॉक? हम एयरलॉक में है ही नहीं। चलो चलो चलो। ओके यहाँ पे कुछ भी नहीं है लगता है। आजा अंदर। ये रिसर्च कितना समय लगेगा यार सही में। कंफर्म। ओ हो गया। ओह डैम नाइस। ये नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है अभी के लिए और कुछ नहीं कर सकता, तो जिसका मिला है उसके लिए जाते हैं। ना 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 यहाँ से जाने का। ये चाबी मिली आखिरकार हमें, और उस चाबी का मैं इस्तेमाल करूँगा। बात अब यहाँ पे किसी से लड़ने का नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये रेड डेविल का है और उन्हें हमें हमले करने का आई मीन शायद हमला करे, क्योंकि उसने बंदे ने असल में लू ने भेजा कि नहीं कोई मैसेज कि मैं हमारे कि नहीं पता नहीं। अब तक तो कम से कम कोई हमला नहीं कर रहा है। काफी बड़ा है ये। ओके पूरा गोल घुमा रहे हैं। कितना घुमाएगा यार ये गेम गोल? मेरे हिसाब से उधर जा सकते हैं, वहां पे कुछ है भी, बल्कि जाके देखते हैं। कुछ है उधर डेफिनेटली। एक्वस हेमाटाइटिया। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये चौथा वाला होगा जो अब तक हमें दिखा नहीं है ना। एक्वस हेमाटाइटिया वो। ओह वेल यहाँ पे एक्वस हेमाटाइट है तो ले लेता हूँ। इधर इसमें क्लोरीन मिलता है, लेड मिलता है, एक्वस हेमाटाइट मिलता है, और चौथा वाला नहीं है मेरे पास अब तक।
ऊपर चढ़ते जाओ। भाई तू कितना अंदर है? Oh damn यार, this lock is too difficult, हाँ? एक्सपर्ट बनना होगा मुझे लॉक पिकिंग में। जा जा जा। एक्वा सेमेटाइट लेते रहो, मिल रहा है तो क्यों ना लूं फ्री में। सही में बहुत ज्यादा एक्वा सेमेटाइट है। यहाँ पे एक और, यहाँ पे भी एक और, उधर एक और। मालूम है क्या, अगला वाला मैं शायद अगला स्किल में लॉक पिकिंग लेने की सोच रहा हूँ। सही में काफी है। पता नहीं कहाँ पे जरूरत पड़ जाए, किस में जरूरत पड़ जाए। वो रहा। एक पूरा रिसर्च बेस है यहाँ पे। मेरे हिसाब से ये जीनोबायोलॉजी वालों का रिसर्च बेस था ये। इसलिए ये यहाँ पे है क्योंकि रेड डेविल्स जो थे वो भी जीनोबायोलॉजिस्ट के ही पार्टनर्स थे बेसिकली, उनके गार्ड्स वो सब बोल दो। काफी कुछ है चलने का। जाना यहाँ से ये, पर इधर एक और कोई रास्ता है। बाकी यार रिस्ट्रिक्टेड एरिया हमारे लिए नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड। पहले इससे बात करूं, फिर वो दूसरे वाले रास्ते में जाऊंगा मैं घूमने। So you must be the one who got me out of the red with the trade authority. Can't say I don't appreciate it. I doubt you came all this way just to do me a favor. I mean kind of तेरे लिए फेवर करने के लिए आए हैं हम। Now you want to explain to me why you're going around harassing nefarious old men by wiping away their hard-earned debts? ये हेड्रियन का नाम लूं या फिर डायरेक्टली ऐसे ही बोल दूं? Tissue sample? You came all the way down here for that? Must be some damn important cells. You want to tell me what I'm about to be staring at? पर ये सही में बता देते हैं सर। Fast-growing pteromorph. That is concerning. Who exactly told you to bring this to me? Hadrian. She gave you this? If she made you come all the way for this. Let's get inside. I need to see these cells. और मैं भी फाइनली जानना चाहता हूँ इसके बारे में कि क्या है इस टेरर मॉर्फ के बारे में अलग सा। एक मिनट, सारा कहाँ है? ये रही सारा, ये रेड डेविल्स। Gonna ask you to not touch anything. Got some projects in the works down here. I wasn't expecting guests. Oh, and Lou mentioned how you took care of the dead. Can't say I'm thrilled the Trade Authority got their mitts on the research, but I guess that's the price you pay not to live in a cave the rest of your days. इसके यहाँ गोल्डन है क्या? नहीं,
queued up. Let's gaze into this abyss, shall we? All right. Just get those cellular markers tagged. Wait. Where are the markers? This can't be right. This sample, it's Londinian. I'll need to get this all in a slate. Adrian really gave you this sample. You're not lying to me? Because if you told me this was a hoax, and it'd be the best damn fake I've ever seen, I'd be mad and very, very relieved. Can't just humor an old man, huh? This sample, it's got all the indicators of the worst terramorph attack in human history. I presume you've heard of Londinian. It was. An entire city wiped off the map. The swarms were so bad, they had to blow the spaceport and seal the place off from the galaxy at large. Not a lot of samples made it off the world from the time of the attack, but the ones that did, well, they look just like this one. I didn't detect any of the telltale signatures this specimen ever sat on a ship while it was alive, either. I don't think it was transported to Talseti. This specimen, it grew there, faster than any terramorph should. Which means, if we're about to start a new era in human-terramorph relations, where big, sudden Londinian-style attacks can happen outside Londinian, that's not gonna end well for humanity. It would be the end of us as a species. So, you lugged this bad omen all the way here. You want to tell me what your plans are for it now? सही बोलूं तो मुझे कोई आइडिया नहीं. ओह, इसे लेके जाएं क्या? या फिर ये बोलने से हो जाएगा? The circle, huh? Could use a drink about now. Here, faster we take the lift to the surface. Not supposed to use it, but given the circumstances, I'm inclined to just ask forgiveness. Let's get going. Meet Hadrian at the sixth circle. चलो उससे पहले इस पूरे एरिया को मैं घूमना घूम के देखता हूँ कुछ चोरी करने के लिए है क्या. कुछ तो होगा यार. ये रेड डेविल HQ है. इन्होंने सही में कुछ भी नहीं रखा है. Why are you bothering to carry all that junk? Shit. यहाँ पे होगा ना कुछ. यहाँ पे कुछ भी नहीं. ओह, तो ये काफी नहीं है यार. सही में कुछ भी नहीं है यहाँ पे. क्या बकवास HQ है ये. Constellation pack. ना मेरे पास कॉस्मेटिक है ही नहीं यार. कॉस्मेटिक चाहिए. पॉलीमर चाहिए, कॉस्मेटिक चाहिए. कुछ भी मॉड डालने के लिए मुझे कॉस्मेटिक चाहिए. बहुत अच्छे. मेरे पास एक भी कॉस्मेटिक नहीं है. मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉस्मेटिक चाहिए होंगे. इसका भी देख लेता हूँ एक बार. ठीक है. स्टैंडर्ड बैरल इससे होगा. स्टैंडर्ड इश्यू बैरल. मास बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा, रेंज और एक्यूरेसी बढ़ेगी. मास कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है. नियॉन चाहिए इसके लिए. बहुत अच्छे. इंटरनल हाई पावर.
एयर ट्रिगर एक्यूरेसी थोड़ा कम होगा, फायर रेट बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी। ये सही बोलूँ तो यही करने का मन कर रहा है, पर ये कर नहीं सकता। बहुत अच्छे है। वेल इसको कुछ नहीं कर सकता। 3 मोड्स हैं। मसल सिर्फ ये कर सकता हूँ। सही बोलूँ तो कोई भी नहीं है मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इनके लिए। ओ हेल्थ। क्रेडिट दिखा मुझे। और कोई क्रेडिट है क्या? ना, कुछ भी नहीं है क्या सही में इधर? मुझे लॉक पिक करना है। एक लॉक पिक वाला कुछ दे दे यार। एक्सपर्ट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, वरना मैं उसे करता। मुझे मजा आता है लॉक पिक ये सब करने में। Entertaining the notion of xeno warfare angers me to the core. Cartridge, ammo, restores 5 health, ठीक है। O2 रिकवरी का भी चलता है, सही है। मान में क्या अभी अपना थोड़ा हेल्थ बढ़ा देता हूँ। ये ले लो, ये ले लो, इसे भी ले लो। ये एक ही अभी के लिए तो। नो व्हाई नॉट, ले लो ये भी। अब और कुछ कर नहीं सकता हूँ, सीधे चलते हैं आगे। सही में यार दूसरे रास्ते फिर से नहीं जा पाऊंगा। चलो अभी बढ़ते हैं आगे, और क्या कर सकते हैं। ये किसी और जगह पे आए हैं हम। भाई कोई गाड़ी नहीं है क्या तेरे पास? इधर नहीं बुला सकता मैं अपने? एक मिनट रुकना। फास्ट ट्रैवल। अरे यार कांट ट्रैवल। ओह यहाँ पे दिखाता है रिसोर्सेस क्या है। पानी, क्लोरियम, लेड और एक्वस हेमेटाइट। पानी पता नहीं कहाँ से होगा। रेट 0 out of 2। उससे याद आया यार, एक और मारना है लेजर वेपन से, 5 पिस्टल से मारना है। रैंक अप 50 मारो। सक्सीड इन 3 स्पीच चैलेंजेस। पिक 5 लॉक्स। ये भी एक है जिसकी वजह से मैं लॉक्स का चाहता हूँ। वायलेंट टारगेटिंग मोड, ठीक है। इसके लिए क्या करना है? ठीक है, क्राफ्ट 5 यूनिक फूड, ड्रिंक्स, ड्रग्स, वेपन मॉड्स और इक्विपमेंट मॉड्स। ठीक है, कर दूंगा अगली बार। मुश्किल तो नहीं होगा वो करना।
लेड का यूज़ कहीं तो होता है, वो क्राफ्टिंग वो सब में इस्तेमाल होता है ये। I think we need to get rid of some of that gear. स्टोरेज, अब फिर से भागो उधर। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये कुछ अलग है। शिट, ये स्कैन हो गया और अब 3 आउट ऑफ 4 हो गया। स्कैन ही करना था। मुझे इससे ज़्यादा पावरफुल करना हो उसके लिए। ये काफ़ी नहीं है 100, इसको ज़्यादा ताकतवर करना होगा। तो एक्वस हेमाटाइट इसके अंदर कंसिडर नहीं होता है। पीबी, क्लोरीन और ये जो अभी मिला था क्लोरोलीन, कुछ जो भी है वो लंबा चौड़ा नाम, वो ही है। और पानी, ऑफ कोर्स पानी पर पता नहीं कहाँ मिलेगा। इसका मॉड डालना ही होगा। मुझे लॉक पिक भी चाहिए, पर उससे ज़्यादा मुझे चाहिए ये अपना वेट लिमिट बढ़ाना। वो पता नहीं कैसे बढ़ाऊं मैं, कोई एक स्किल होगा उसके लिए भी। सारा वो रही पॉसिबल वॉकर हो रहा। अब यहाँ से निकलना है। मैं ये क्वेस्ट ख़त्म कर रहा हूँ यार, कुछ भी हो जाए। मुझे लगा था इतना बड़ा क्वेस्ट होगा, उससे छोटा था। मुझे लगा बस वो क्या बोलते हैं, बस उसका ओरिएंटेशन करना होगा और कुछ नहीं। मालूम होता इतना बड़ा होगा तो शायद शुरू नहीं करता। चलते रहो चलते रहो। पानी पता नहीं कहाँ मिलेगा। और पानी के लिए ये डेफिनेटली इस्तेमाल नहीं करना होगा कटर का। पानी को कैसे कट करेंगे? क्या उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कट कर देंगे क्या? कौन भाग रहा है? मैं तो नहीं। Shit. हमारा शिप कहाँ है? नेक्स्ट सर्कल वो इधर सिडोनिया में ही है।
Shit. अब सिडोनिया के अंदर ही जाना है. Shit यार. सर्कल बाहर है कि नहीं अंदर ही है. मालूम क्या इसके पास जाके थोड़े बेचता हूँ चीजें. Need some work done? Got anything you need to offload? Trade Authority is always buying. Kiosk right here for you. Nothing for us to do. You're in good flying condition. थोड़ा मॉडिफाई करता Okay, हूँ. no ठीक है. problem. इंस्पेक्ट. ठीक है. अपग्रेड शिप. कैंसिल. शील्ड का देखना है. ओके इसका जितना कर सकता था कर दिया. ओह शिट. मैं अपने रिएक्टर को नहीं कर सकता क्या? ये रहा ना रिएक्टर. हाँ. और ग्रैब ड्राइव्स को करने का कोई फायदा नहीं है. शील्ड का मैंने जितना कर सकता था कर दिया. ओके एक्सेप्ट. नहीं निकलो. Been a long time since I've been to Mars. Sol system doesn't get more exciting. हमारा क्या बोलते हैं होम सिस्टम है और फिर भी लोग इसे छोड़ के चले गए. अर्थ के बारे में तो जाने का कुछ है भी नहीं. बल्कि अर्थ को तो पूरी तरह उन्होंने खराब ही कर दिया ह्यूमंस ने. If you're going to use the elevators or stairs, try to keep them clean. I hate violating them. सही में यार. अर्थ में जाना देखना चाहता था मैं पर कोई चांस नहीं है उसका. कोई मैग्नेटिक फील्ड का कुछ बोला था हो गया खराब पूरा. Is that really her? Adrian. Percival. My God, look at you. You're an old man now. You're no hassling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say, Not here. Let's talk somewhere more private. Lou said we could use the back. बैक मेरे हिसाब से ये होगा. यप. आजा अब बात करो. Lou gave me the abridged version of what went down. Yeah, I can't thank you enough for taking care of all that. makes two of us. I hope it ultimately didn't end up being too much trouble. That's certainly not what I was expecting you'd have to go through. But thank you. I'm just glad you both came through intact. So, were you two able to get that workup together? Got it right here. That sample? It's an exact match for the ones from Londinian. Londinian.
That's exactly what I was afraid of. Not thrilled to be the bearer of that kind of news. That's for damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now, we've got more questions than answers. So I've been trying to figure out what it's gonna take to access our old Terramorph data. Good place to start. What'd you find? It's in the archives. The Armistice Archives? Doesn't that mean we'd be dealing with the Cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the Cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on 2 conditions. 1, they want to see this analysis you two have procured. And 2, they want to discuss what happened on Tau Ceti. With both of us. हाँ ये चलो पूछते हैं. Of course. You deserve the full story. Percival and I, we're not just researchers. We were military scientists, ran a division of the UC together that deployed aliens on the battlefield as weapons. ये तो हमने मालूम पड़ गया था सीधा. Place I was hiding out. That was our unit's home base. After some early fits and starts at other facilities, the place eventually became the heart of UC xeno-warfare. A practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the UC military cut us loose for what we'd done. नहीं ये नहीं. Oh, well, that means a lot. It's not something I'm exactly proud of. But it was during that assignment that the UC asked us to explore deploying Terramorphs on the battlefield. The project never got off the ground, but the data our team gathered is now sitting in the archives, along with all the other information banned after the Colony War. Under the watchful eye of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the Cabinet to help us access that data, it'll give us the tools we need to decipher what exactly this sample might mean. And hopefully, how to prevent more attacks like the one that spawned it. I mean, I hope they will, but accessing the archives, it's not 100% up to them. They'll also need the consent of the other signatories of the Colony War Armistice, the Freestar Collective and House Varun, in order to unlock it. Since neither group is exactly on great terms with the UC at the moment, for various reasons. Exactly. It's going to mean negotiations and deals and plenty of diplomatic legwork to see this through. But I don't see a better option to solving what's going on here. So it's gonna be up to us to get them on board. Okay. I mean, हाँ पूछ लेता हूँ. Because the Terramorph project was doomed from the start. Terramorphs are too mean, too smart, too hungry to be used in combat. Trust us, we tried. The data that's in the archives, it's historical write-ups, anatomical notation, food chain analyses. I doubt they would have even classified it if it didn't have a xeno-warfare logo on it. You have my word. It's not a threat. Okay. All right. I'm gonna go get this work up into the Cabinet's hands. I'll meet you out front of Mast in New Atlantis. Good luck. You two are gonna need it. 250 ऑफ फिर भी नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंचा. Shit. ओ यार सही में अभी भी खत्म नहीं हुआ है. Be careful down near the mines and enter any active sites at your own risk.
मतलब मैं क्या ये ही कंटिन्यू कर रहा हूँ भाई? ये एक मेन स्टोरी की तरह लग रही है सही में। I don't know. I'm kind of worried the council is going to give away too much. सही में यही लग रहा है कि एक फुल ऑन मेन स्टोरी होगी। How's it going? Can I help you? Yes, you can. You looking for anything in particular? Great. Cool. That's what we... Sell weapons. Modified maelstrom. 13. I mean उतना नहीं है। क्या एक्यूरेसी ज़्यादा है, भले ही फायर रेट ज़्यादा नहीं है। मास भी इसका कम है। इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा है, इसके साथ रखता हूँ, इसे बेच रहा हूँ। Yo, stay good out there. एक मिनट, इन सबको पहली बात तो मुझे डालना है फेवरेट करके वेपन्स को। ओके, मॉडिफाइड इक्विनॉक्स को यहाँ पे डालते हैं। ओह शिट, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। इक्विनॉक्स गलत सोच रहा था मैं। शिट, मैंने गलत चीज को बेच दिया ना, तो कुछ नहीं कर सकता अभी। चलो अब जाके आई फिटनेस का करते हैं। पूरा का पूरा क्वेस्ट खत्म करना है। भाई सही में क्या मस्त साइड क्वेस्ट है ये। इसकी पूरी कहानी, बैकग्राउंड, ये सब। इस साइड क्वेस्ट जो है इसके ऊपर एक पूरा एक गेम ऐसे टाइप का बना सकते हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये जो लंडनियम में जो अटैक हुआ था ना, वो इससे रिलेटेड है। ये जो जीनो वॉरफेयर में जो भी रिसर्च हुआ था उससे रिलेटेड है मुझे लग रहा है। और उसके वजह से वो शायद ना चाहेंगे यूसी वाले। तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली गलत हूँ। Fun? Now what? पहली बात तो शील्ड को फुल रखो। सही में ग्रेट। मैंने लेजर का इतना ज्यादा कर दिया है। ओके मुझे जानना है कोई लड़ाई करनी है मुझे सही में। नहीं, पायरेट से लड़ने के लिए कहाँ जाना होगा मुझे? यहाँ पे तो नहीं। जो भी हो। And complete. Enjoy your stay in New Atlantis. Okay. And complete. Enjoy your stay in New Atlantis. 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 And complete. En
मैप लगाना चाहिए सीधे यार मुझे। लॉज में नहीं जाना है, मुझे जाना है मास डिस्ट्रिक्ट। ये ऑनलाइन थोड़ा चेक करूंगा यार सही में मैं पायरेट्स से लड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा। अभी के लिए तो सीधे वो रही। मैं सोचा पहले पॉसिबल होगा पर फिर याद आया कि पॉसिबल नहीं आने वाली। हम बात करेंगे यहाँ से हेड्रियन के साथ। The workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So, in the interest of full disclosure, there's one more thing you ought to know before we head up there. My relationship with the UC. It's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the Colony War, former head of the UC Navy. They called him Ve Victus. Woe to the defeated, in Old Earth Latin. A title he earned. The program I was a part of, it was the UC's attempt to create a new generation of military minds from one of their most respected tacticians. Secure the leadership of the UC military for generations to come. I'm the last. A few of my siblings, they passed when we were young. Training accidents and the like. But most of the rest were deployed to the front lines during the Colony War, and they never came back. Not a day goes by where I don't think about what the world would look like with them still in it. A non-trivial amount of gene editing. Clone, honestly, isn't even really the right term for our relationship, thanks to the amount of donor material that was required to bring me into this world. He and I are different on more than a few levels, but there's no denying the fact we're inextricably linked. No. They made a pretty grave miscalculation. The man I was cloned from, my father, was executed for acts he committed during the war. The man caused a lot of death, on both sides. Freestar Collective, and UC. Military, and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. He had his men open fire on civilian ships during the Battle of Shayad. A battle that he ultimately ended up losing anyway, devastating the UC fleet and bringing the Colony War to an ugly end for the UC. But he's also the one who ordered the bombing of the Londinian spaceport during their outbreak, condemning countless lives. Both sides agreed the settled systems would be better without him. बंदे ने काफी सिविलियंस को मारा। सही में काफी सिविलियंस को मारा है बंदे इसके बाप ने। उसका नाम ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फ्रांसवा सनॉन। हाँ, फ्रांसवा सनॉन। लंडनियम में सारे सिविलियंस को मार दिया। और वो जो हमने उस ओरिएंटेशन के समय देखा था कि फ्री स्टार कलेक्टिव ने सिविलियंस को आगे भेजा, शील्ड की तरह यूज़ किया, जो प्रोपागेंडा जो भी था उनका, उसका भी शूटिंग का ऑर्डर इसके ये फ्रांसवा सनॉन से आया। चलो ये इसकी। You doing okay? Yes, I'm doing okay. टेंशन मत ले तू। I really appreciate you saying that. I just thought you deserved to know, considering how much you've done already. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Or if you've got any last-minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here.
That's actually a souvenir from my time on Mars. The Red Devils unit I was a part of, they were founded by recruits who'd worked some of Mars' deepest mines. Folks used to adversity. The dust at those depths, it seeps into everything. The human eye included. Where the name Red Devils came from in the first place. It became an unwritten rite of passage that anyone wanting to enlist with the Devils had to do a stint in the mines before they could join up. The Devils were always talked about in such revered tones during my training, so as soon as I was old enough, I signed up, and the eyes were my parting gift. मैं एक्चुअली वही सोच रहा था, इसके भी आँख लाल है, पर्सिवल के भी आँख लाल है, तो वो भी एक क्लोन है क्या? पर नहीं, apparently वो मार्स की वजह से. Well, thinking about it more, I suspect there'd be value in sharing the fact that the Terramorph project was, well, a failure. There's no need to be afraid of this data being weaponized. Knowing that should calm some of the Cabinet's fears and make it easier for us to dispel any suspicions the other factions might have about our intentions. I strain from the amount of reading I've got on the horizon if we succeed. The Terramorph project never went anywhere. It couldn't. They're deadly creatures, but they aren't xenoweapons. The Cabinet not opening the archives is probably a bigger risk than them handing over the files. That data itself isn't dangerous, which probably wouldn't be a bad point for us to bring up, should the opportunity arise. Okay. ये भी पूछ लेते एक बार, इससे भी शायद कुछ वो जब कैबिनेट से बात करेंगे तो एक तो ये बोलना होगा कि टेरामॉर्फ प्रोजेक्ट वो फेल हो गया, और दूसरा है कि अगर ना दे हमें वो एक्सेस, वो ज़्यादा डेंजरस है. ये दो मुझे याद रखने होंगे जब हम उससे बात कर रहे हैं, उनसे क्या बोलते हैं, काउंसिल से. पर अब एक कि आखिरी इससे भी शायद कुछ मिल जाए. I mean, we never spent a lot of time together. He was too busy being Fleet Admiral to deal with kids. I was raised by a pair of Guardians instead. Until his defeat during the Colony War, though, he was known as an extremely effective commander. Savvy, perceptive. That mind opened a lot of doors for him. And for me too. But Victus, for all his ability, was heartless. Ruthless to a fault. In the end, that's what cost him his life. Okay, chalo. Then I guess it's just a matter of... The Cabinet meeting is about to begin. All parties, please proceed to the Cabinet chambers. Sounds like our cue. Here we go. 2 मिनट देना है, एक चीज मुझे चेक करना है. गेम टाइटल है, क्यों नहीं दिख रहा फिर? अब आ गया गेम टाइटल, दिख रहा नहीं था पहले जब मैंने चेक किया था. ओके, मैं इसका इंतजार नहीं करने वाला, मैं सीधे नीचे जा रहा हूँ. The well's been having brownouts all the time. Mast finally sent someone down there, but nothing's changed. अरे रहा ब्राउन आउट्स, इतने ज़्यादा साइड क्वेस्ट मिलते जाते हैं यार सही में. Need to make sure all of those reports are annotated by the end of the day. Oh well. Oh damn. Ah, welcome. You must be the captain Hadrian mentioned in her report. You have our thanks for the risks you faced in securing this information. नहीं, ये इसके साथ जाना ज़्यादा अच्छा होगा. हेड्रियन का नाम बोलना नेसेसरी नहीं है. Well, I'll be sure your commanding officer hears that you've done them satisfactorily. Now then, we have 2 petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. A request which will require not just this body's agreement, but that of all 3 Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject,
but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. Okay, ये देखता हूँ. ये है. Informed decision without data. That is something to consider. Though we also have to take into account the nature of the data you require. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, terramorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. They've been happening for generations. To demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack seems at best panic. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask, how many deaths the cabinet requires to act? 50? 50,000? Because if tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we? And while there should be no doubt the preservation of life stands paramount among this body's duties, Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this terramorph seem at all alarming to you? Okay. ये बोलना शायद होगा. अब वही है ना, I only know what I was told. Its tissue matched ones from Londinium. ये बोल सकता हूँ, पर it wiped out a colony that never saw it coming. That's pretty alarming. पर ये Londinium का बोलना सही होगा. Just taking her word for it as well, then. Shit. So it would seem. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, would you grant the request made to open the archives? यही मैं बोल रहा था, बोलना जरूरी है. It doesn't matter if it can be weaponized or not. The archives need to remain sealed for now. There's no reason to rush into a decision of this magnitude. That? I hadn't thought of that, Captain. An excellent point indeed. The other powers would likely be much more inclined to work with us knowing that. Chief Diplomat. That point is a good one. Very well, you have my agreement. The galaxy is lucky you were here today, Captain. You and I are in agreement, Chief Diplomat. So, if there are no other objections, I believe we can agree to give our full backing to make the request to... What was that? Attention. An incident has occurred. Facility lockdown engaged. Incident? Chief Sarkin, what's happening? There's been an attack at the spaceport. Terramorphs. Shit. Terramorphs. More attacks. Just as predicted. Good God. They're here. Now. There must be another explanation. The creatures evaded our scanner somehow. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Yes, ma'am. Admiral Logan, the local barracks can provide support? I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. Going to take a while to bring them in. Well then, we'll have to make do with the tools we've got.
और वो You हम हैं। two. We can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming and that you've dealt with these things before. Now go show them how it's done. We're on it, ma'am. Captain, I'm right behind you. Let's get down there. ये बंदी हमारे खिलाफ क्यों बात कर रही थी पहली बात उसमें? भाई तूने भी देखा है वो टेरर मॉर्फ ने क्या किया, तुझे लंदन नियम के बारे में मालूम है, हमें वो डेटा चाहिए। DC security has their order. Hold the line. Building's on lockdown. There'll be plenty of time to talk later. Right now, you're needed elsewhere. I'll make sure the diplomatic machine is ready to serve once you've saved the city. The commanding officer should be able to get you up to speed. President Alexandra Abelo. You can do this, Captain. चलो। आओ, बाहर आ जाओ तुम लोग। और मैं जाता हूँ नीचे। You! The EM rifle, grab it! Now! All that junk you're hauling is seriously slowing you down. एक मिनट रुकना। एक नया वेपन मिला ना मुझे कोई? EM Equinox 10। क्यों करूँगा ये? ओके, एक्यूरेसी इसका ये जो करंट है वो ही ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा डैमेज, कम मास। फिर भी इसे रख देता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ इसे। Oh shit! अबे यार, हाँ अब ये है वही ना बात। Shit. ये क्या हो रहा है? ओके, ये करना है। या नहीं शिट यार। ना इसे लगभग मार ही दिया। और एक ही बच्चा है, नहीं बस बात करना बाकी है। Thank you for what you did. We didn't want to hurt them. The way those people were acting, I've seen this before. They were under the Terramorph's influence, weren't they? I don't know. They were down at the port and they just started screaming. We tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us. People we knew. They went berserk. Pheromonic projection. Some Terramorphs, they can induce this fog. It affects everyone differently, but some people just lose control, turn against everyone around them, even if they don't want to. They're like a puppet. You kill the morph, you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with our fire, and keep that EM weapon at the ready. I honestly was just wondering the same thing. But no, you don't need to worry about me. I've had a Terramorph try it on me before. I'm not susceptible. So we'll just have to make sure to watch out for each other down there.
I'm not suggesting. It's documented behavior. The result of the projection, though, can vary wildly. Some folks just shrug it off. Others hallucinate. And some lose control altogether. They'll lash out at anyone around them. But still be aware while they're doing it. Those cases, you'll either need to knock them out with EM fire, or free them by killing the Terramorph. Let's do it. Nat's unlocked. Please, do what you can to help them. मेरे पास उतना एमो है इन सबको करने के लिए। मैं टॉक नहीं कर सकता। और सही में मेरे पास उतना एमो नहीं है। 459 मुझे नहीं लगता काफी होगा। तो देखते हैं। Oh, ये रुक रही भी नहीं है। Evacuation order has been issued for the spaceport district. All citizens are required to proceed to the nearest shelter. Okay. You might back up. Just stand there. Good. वो रहा टेरमॉफ। नहीं है मुझे लगा तो पॉज हो जाता है Captain, you're going to be okay. It's not real. Whatever you're experiencing right now, it is not real. We have to put down that door. समझ में नहीं आया कैसा मुझे लग रही है Stash the EM and pull some firepower. Let's move. An evacuation order has been issued for the spaceport district. All citizens are required to proceed to the nearest shelter. यहाँ पे सेव कर दो कंफर्म और You might back up. Just stand there. Good. इससे कुछ नहीं होगा तेरा ना ये शूट कर रहा है दिखा मुझे अभी ओह शिट उसके वजह से मर रहा हूं मैं मार और अब कोई और नहीं होना चाहिए Our experts? We've got the remaining creatures locked down on the landing pad, but we're barely holding our perimeter. They said you've done this before, huh? Well, got one fire team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more of my men. Put those things down and do it fast. We'll hold them as best we can. Oh shit, एक से ज़्यादा है. Heard you might be looking for some backup. You say the word, we're out there on your 6. You two have any experience with Terramorphs before? Only the brief they just gave on the way here, but we know how to handle pressure. Surviving a full-on mental assault isn't the same as keeping your cool in a firefight. Might make you more liability than asset.
We're not UC security. You don't need to worry about us. Roger that. We're on you. Shit. Whatever's out there, I'm ready. पहले इसको देखना होगा इधर जो है, फिर अगले वाले का। उससे पहले साइंस मेडिसिन नहीं, तो स्कैनर एंड स्कैन डिस्टेंसिंग नहीं, ये ज़रूरत नहीं है। टेक का देखता हूँ। ये थ्रस्टर्स, बूस्ट पैक्स और यहाँ पे कुछ है क्या? ये नहीं, सोशल है ना कुछ। अनलॉक बाय फॉर 5% लेस एंड सेल फॉर 10% मोर, वो बुरा नहीं है। व्हेन सर्चिंग कंटेनर्स, ठीक है। फिजिकल, हाँ ये चाहिए मुझे अभी। उसके साथ ही सबसे पहले चले जाना चाहिए था, मैंने गलती करी। हील 200 अब तक कब का हो चुका होता मेरा। Well, 6. Captain! You're going to be okay! It's not real! Whatever you're experiencing right now is not real! We have to put down that morgue! मेरे पीछे मत आ। You're not gonna leave me, are you? अबे यार। ओह, उतना आसान नहीं है, स्पेशली जब मैं ओवरबर्डन हूँ। इसे मानना उतना आसान नहीं है। सही में इसे फिर से मारना होगा। You might back up. Don't just stand there. Turn. ना। मारते जाओ। Shit. Oh, fuck. Turn on you. Kill them first. Creatures locked down on the landing pad, barely holding our perimeter. They said you've done this before. Well, one fire team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more of my men. Put those things down and do it fast. We'll hold them as best we can. Heard you might be looking for some backup. You two have any experience? Only the brief they just gave. Surviving a full... We're not using... Hello. Roger that. We're on you. एक मिनट रुकना। रीलोड करो इसको। रीलोड करो। इसको रीलोड करो। और ये चलो चलते हैं। एक मिनट, ये O2 को पूरा वापस होने दो।
मुझे ये O2 का चाहिए इसके खिलाफ लड़ने के लिए। इसके साथ शुरू करते हैं। यार मैं फिर से सेव करना भूल गया। मेरी हेल्थ वापस आ जाएगी, वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Holding our perimeter. They said you've done this before. Well, one fire team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more men. This thing's down and do it fast. We hold them as best we can. Heard you might be looking. You two have any experience? Only the briefing. Surviving a... We're not using. Roger that. We're on you. Stay sharp. Okay. इसको पूरा O2 को वापस आने दो, उसके बाद सेव करना है सबसे पहले तो। सेव करो। इसका 12 है, 13 है, 6। ये ज़्यादा EM का कर रहा है। 36। ठीक है, चलो इसके साथ शुरू करता हूँ। Whatever you're experiencing right now, it's not real. You have to put down that sword. इसे जल्दी से मारो। They got me. जा। एक को मार दिया, दूसरे के पीछे जाना आप।
सब कुछ रेडी रखो। इससे उसको थोड़ा डैमेज कर सकता हूँ अगर उससे यहाँ तक ला सकूँ तो। ओके, कोई और है जिससे ना आगे बढ़ने से पहले से चलो। कहीं और है क्या? O2 चाहिए मुझे। यहाँ पे एक और है जो मुझे दिखा। अभी एक दो दिख गए हैं मुझे जिससे मैं इससे काफ़ी डैमेज कर सकता हूँ। उसके पास कहीं पे है क्या कोई? एक और यहाँ पे है, इसके पास मुझे एक चाहिए। यस, जा। ये हो गया, मार जाएगा। It's got me! It's got me! Where are you? All wrapped up. We should go tell the sergeant what happened. It's over. Thank God. If these things reached the populated areas of the city, we would have had an absolute massacre on our hands. Okay. ये काफी बड़ा, मुझे पूरा यकीन नहीं यहाँ पे कुछ होगा, पर अभी के लिए जाके मेरा O2 ऑलरेडी खत्म हो गया। भाई यार, जब काफी दूसरे वाले को काफी आसानी से मार दिया सही में। पहले वाले के खिलाफ 2 बार मरा मैं शायद, अगर मैं गलत, हाँ 2 बार मरा हूँ। जो यहाँ पे था उसके खिलाफ 2 बार मरा, पर इसको 1 बार में ही मार दिया मैंने। सही था। भागो यार, जब तक इससे बात करूंगा ये पूरा वापस ठीक हो जाएगा। Heavens, you're back in one piece. I guess our people weren't so lucky. The cabinet's already got a plan in place to make sure attacks like this never happen again. Can't happen soon enough. Thank you. The city owes you both a debt after this. We were just in the right place at the right time. Captain, we should report back to the President. Let her know the terramorphs have been dealt with. Take care of yourself, Sergeant. मरे हुए लोग, अपनी चीजें दे दो, तुम्हें जरूरत नहीं इसकी। मुझे लगा ये एक जेट पैक है। और कौन मरा है? अपनी चीजें दे दो मुझे, जो कोई मरे हो। अनफॉर्चुनेटली और कोई नहीं मरा। वो है ना, या फिर वो, मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे है ये मेन बिल्डिंग जो है। वो क्या आवाज़ थी? ये क्रिकेट का आवाज़ है क्या यहाँ पे? Attention. The spaceport has been secured. Safety precautions remain in place. Please wait for the all-clear signal before exiting your homes. That is all. एक मिनट, ये लॉज किस तरफ था? उस तरफ कहीं था ना शायद, या फिर ये लॉज वाला एरिया ही नहीं है क्या? मुझे याद है ये मूर्ति जो है, बोला था व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टैचू, वो सब सारा ने कुछ बोला था वैसे। यस, If you're overloaded, we should stop and prioritize what we're carrying. हाँ।
चलो जाके सीधे उससे बात करते हैं अब। नहीं ये नहीं है, ये है ना। How the hell do terramorphs get into the city like that undetected? Let your people all know how much we owe them today. Yes, ma'am. Ah, there you are. I believe we have some things we should discuss. My officers were unprepared for what happened at the spaceport. I intend to correct that. Those creatures killed UC citizens. They're not killing anymore. Captain? Hadrian? It would appear that the Cabinet owes you our thanks for what you did for the city today. As well as an apology. Your concerns about the terramorphs, well, consider them validated. Thank you, ma'am. Of course. I only wish we could have acted sooner. Now, today's events have only clarified our path forward in the eyes of the Cabinet. You will have our full support in collecting the terramorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the Cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately, to your former rank of Major. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? Yes. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The Cabinet wants you, Captain, to be that representative. The Cabinet wants progress, and wants it quickly. You're already far more familiar with the situation than any diplomat would be. There's also no diplomat alive that can claim they helped keep a cadre of terramorphs off the embassy doorsteps. The Cabinet was unanimous. They want you. We do. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. So, will you help us? I'm glad to hear it. Now, we, of course, won't be sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. You're dismissed. Use up the cavalry. Move back to prevent more attacks. I'm gonna go check in with Attacks? Chief Engineer Kulkarni. They can't Start happen getting again. a plan together for that data. The things we do here, tech we develop, benefits all of humanity. Almost next level पे पहुंच गया हूँ मैं। बात करते हैं। These orders, a Vanguard captain. You... Yes, sir. I'll make sure they get what they require. ये पूरी तरह कन्विंस नहीं है हमें भेजने के बारे में। देखते हैं क्या बोलेगी हमें। पूरी तरह कन्विंस नहीं है हमें भेजने के बारे में, तो देखते हैं उसके बारे में क्या हमें हमारे से मुंह के सामने क्या बोलेगी। That must make you my Vanguard captain. Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat McIntyre, Chief Yassine's second-in-command. I heard you were instrumental in protecting the city from the attack. You have my gratitude.
I was also informed that you gave quite the presentation to the cabinet. Chief Yassine wants you to know the Interstellar Affairs Office is fully committed to this endeavor, accessing the Terramorph data and beyond. We're going to do everything in our power to make sure you have the tools you need. And that means first getting you into the archives. You do know what the archives are, correct? Yep. फिर से सुन लेते हैं. Huh. All right, we'll start at the beginning. When the Colony War ended, the UC and Freestar Collective came to the agreement some weapons needed to be off limits. Mechs, xeno-warfare. So they gathered up all the relevant research materials and sealed that information away. Terramorph data included, in the archives here in the city. Access to the archives is only granted in cases of dire emergency, and requires a one-time use code from each of the 3 Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Va'ruun. Now, the UC is already on board, so that means we'll need to convince 2 people. The ambassadors of the Freestar Collective and House Va'ruun to hand over their codes. Get them both and you'll have your data. But that's a lot easier said than done. No. Each is a strip of several million random numbers generated on the fly based on biometric keys kept by each of the ambassadors on their person at all times. They're impossible to create without those keys, and those keys stay with the ambassadors, meaning we're accessing nothing if we can't get them on our side. It won't be. Both ambassadors have reasons they won't, or can't, work with us. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Threats and violence are off the table here. Though that doesn't mean we can't get creative. But it does mean we need to get you up to speed on who you're dealing with. Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar, or Ambassador Balmore of House Va'ruun? Oh, ठीक है. किसके साथ जाए? मैं हाउस वरुण के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ, तो इसके साथ जाते हैं. Ambassador Balmore's a challenge. When the rest of House Va'ruun retreated into seclusion shortly after the signing of the armistice, Balmore stayed here. He's since lent his support to a small number of archival requests, so there's real hope he might again. Though claiming to know how a member of House Va'ruun thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. Well, these days, they're primarily considered a security threat. House Va'ruun zealots, a fundamentalist outshoot of the group that stayed behind when the rest retreated into seclusion, want nothing more than to send everyone not dedicated to their cause to the great serpent in the sky. But that hasn't always been the case. After they ended the Serpent's Crusade about 70 years back, House Va'ruun did take a real run at trying to normalize relations with the rest of the galaxy. It's why they have an embassy here in the first place, why they were included in the armistice negotiations, but then, without warning, they left. Leaving behind, to our knowledge, just the ambassador and his duty under the armistice. It does, but there's a concern. We're not 100% sure Balmore is actually still alive. His public appearances were always rare, but it's been several years now since he last poked his head out. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice. Then you search the embassy for his biometric key, collect your code piece, and we'll go about notifying his next of kin, if we can ever find them. But let's hope it doesn't come to that. The embassy is still legally House Va'ruun's sovereign territory, so we're not technically permitted inside. We've snuck in the occasional spy, of course, but the ambassador has proven more
evasive than you'd expect for a man of his age. But we're quite sure he hasn't left the city. The man stands out. The Varun delegation brought more than a few of their native flora with them when they set up in the embassy. It seems those plants have been allowed to flourish, making it hard for us to verify what's flora and what's ambassador. I have no doubt. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance that should allow you access. Here, this device should get you all the way down to the embassy interior. Once you're inside, though, finding the ambassador is going to be up to you. And fair warning, we received a report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attacks. Watch out for automated security in there. Okay, yeah. The good Ambassador Ratcliffe. She's a veteran of the Colony War, and her only goal in life is to make ours miserable. Now, officially, our office is suggesting you try and negotiate with her. Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her support. And who knows? Maybe that'll work. Stranger things have happened. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. ये बोलने का मन कर रहा है चलो. Huh. Well, if that's the case, I'll wait to be pleasantly surprised. But we do have one item up our sleeve. UC Intelligence has a recording device planted in the ambassador's living quarters, which we suspect you can use to your advantage. But getting caught trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there without being seen. Now, we recovered some intel we believe should be able to help with that. But there's also a disgruntled staff member you might be able to pump for information. Maybe even convince to work with you. Name's Cameron Long. He's younger than Ratcliffe, bears less of a grudge towards the UC. He works closely with the ambassador, making him a promising source for information on the ins and outs of embassy life. And someone who very likely hates her guts. Yes, many. Don't steal anything. Don't get caught anywhere you're not supposed to. Absolutely do not harm anyone. If something goes wrong, we'll do our best to smooth things over, but I can't make any promises. All right. Here, your diplomatic ID. I'll give them a heads up, you're on your way. Not likely to let you through the door otherwise. And take these. Chief Yassine wanted you to have some options on how to proceed in there. Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask. I'd suggest you start with Ambassador Ratcliffe. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff's mind. Be smart out there, Captain. एक मिनट रुकना. ये और tools के बारे में थोड़ा पूछता हूँ. Welcome back. Everything going well with the ambassadors? Official line is that you're to negotiate with her. My suggestion is to access the listening device in her quarters to get leverage on her and don't get caught doing it. She's also got a staff member that might be more sympathetic to helping us. Do with that information what you will. Okay, ये दो ही थे. ठीक है. Good luck then, Captain. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अभी के लिए और कुछ नहीं. Commander to Allah's office. यहाँ पे सेव करो. यप. और स्ट्रीम को यहाँ पर ही बंद कर रहा हूँ अभी के लिए. और मैं मोस्ट प्रॉब्ली
क्या बोलते हैं, लंच के बाद स्ट्रीम नहीं करूँगा। मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, बात करने पे भी दर्द हो रहा है, कुछ भी करने पे दर्द हो रहा है मेरे गले पे, और मैं थोड़ा आराम देना चाहता अपने गले के लिए। तो अभी के लिए स्ट्रीम में जो भी आया, जिन्होंने भी लाइक किया, उन सबको स्ट्रीम में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अब कल मिलूँगा क्योंकि मैंने अगला पूरा हफ्ता छुट्टी लिया हुआ है। तब तक के लिए अलविदा।